Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to APS online learning system. I am Jahanzeb Khan with lecture number 3 of unit 10 simple harmonic motion and waves. First of all, we have a short recap. In the previous lecture, you studied about motion of a simple pendulum, and we proved that a pendulum executes simple harmonic motion. Then we discussed about important features of simple harmonic motion, different terms related to simple harmonic motion, damped oscillation, the vibratory motion under the influence of some resistive force. Then we discussed about wave motion, that waves carry energy from one place to other. Wave and its categories, we discussed two categories of waves. First one was mechanical waves and the second one was electromagnetic waves. Mechanical waves require medium for their propagation, while electromagnetic waves do not require medium for their propagation. Today our topic is about types of mechanical waves. Students, as these are the types of mechanical waves, so it means both of these types will require a medium for their propagation, because mechanical waves require medium for their propagation. The first type of mechanical waves is longitudinal waves and the second one is transverse waves. The definition says, in longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave. यानी इसका मतलब ये है कि ये वो टाइप है वेव की जिसमें जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी मीडियम है, वो वेव के साथ ही पैरेलल मूव करते हैं, उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं. The example of waves, longitudinal waves, is the slinky spring. Let's consider this example. We have a stretched spring. As soon as we release that or apply a force on one end, then what happens? The waves are generated or produced in the spring in this way. In this place you can see the space or the distance between the particles is very less. It means कि इस जगह पर जो particles of the medium है वो बहुत close हैं. वेव इस फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र होगी और एनर्जी को कैरी करेगी टू द अदर एंड. आप देख रहे हैं यहाँ पे वेव जनरेट हुई है, देन दिस वेव वाज ट्रांसफर्ड टू दिस प्लेस एंड टू दैट, एंड अल्टीमेटली एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू द अदर विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. यहाँ जो याद रखने की बात है वो ये, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. यहाँ जो पार्टिकल्स हैं ज़ाहिर है सॉलिड है, स्प्रिंग है, तो उसके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन में, आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है. इट मीन्स व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव पैरेलल, देन हम कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आपने यहाँ ऑब्जर्व किया, इन दीज पार्टिकल्स at some places particles are very closed. This place is called compression, and where the particles are far away, this place is called rarefaction. So in longitudinal waves, compressions and rarefactions are produced. यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा है, this sign is called lambda, which is the wavelength, and in terms of longitudinal waves we defined the wavelength is the distance between two compressions or two rarefactions. The second type of mechanical waves is transverse wave. In this wave क्या होता है? In case of transverse waves, the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. ये उससे थोड़ा सा different है. यहाँ पे particles of medium और wave एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं. बट इन दिस वे, इन दिस टाइप, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर मूव करते हैं. हाउ? यू कैन सी अगेन वी हैव अ स्लिंकी स्प्रिंग. एज सुन एज वी अप्लाई फोर्स और स्ट्रेच स्प्रिंग फ्रॉम हेयर, देन व्हाट हैपन्स? वेव इज प्रोड्यूस्ड बट नॉट इन अ स्ट्रेट, बट इन द टाइप ऑफ लूप्स. ये आपको लूप्स दिख रहे हैं, वेव जो है वो लूप्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है. Now the energy is carried from this end to that end in the form of wave,
and this wave is moving in the form of loops. Straight form इसकी original form है. Those forms which are upper from its original form, जो straight form से ऊपर हैं, ये loops जो ऊपर के loops हैं, these are called crests, and those loops which are lower than its original position, these loops are called troughs. And आप देख रहे हैं direction of propagation of wave is again to the rightward, while the particles of the medium, ये जो medium है इसके जो particles हैं, these are moving up and down, कभी up move कर रहे हैं, कभी down move कर रहे हैं. So the direction of propagation of wave and the particles of medium move perpendicular. So this type of wave is called transverse waves, and the examples of transverse waves are the waves produced in water or the waves produced in string, etc. And wavelength अगर हम transverse wave की form में देखें, then the distance between two consecutive crests or the distance between two consecutive trough, यानी साथ साथ वाले दो crest या दो trough के दरमियान जो distance होगी वो wavelength यानी lambda कहलाएगी. Now students, we are going to discuss about the waves as the carriers of energy. Students, आपने previous lecture में एक simple definition पढ़ी थी wave की, that the waves are the disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion. अगर आप उससे भी ज़्यादा simple definition wave की करना चाहते हैं, then you can say that waves are the carriers of energy. Simply यानी waves energy carry करते हैं. To prove that the waves are carriers of energy, we have an activity. In this activity you can see there is a pond, and at the surface of the pond we have placed a cork. हमने यहाँ पे एक cork रखा हुआ है, and at some distance we have put a stone. As soon as we put a stone on the surface of water, then what happens, around that stone loops are produced. ये जो आपको loops नज़र आ रहे हैं यहाँ पे produce हुए हुए, ये basically waves को indicate कर रहे हैं. यहाँ पे जो ripples आपको नज़र आ रहे हैं ये waves हैं. Now आपने इस cork को तो disturb नहीं किया, you have just put a stone in the water at some distance, but after a while you will observe that this cork will also start vibration. Now why this cork is vibrating? Because the energy that was given to the water by the stone is transferred to the cork with the help of water waves. So we can say that waves are the carriers of energy from one place to the other. सन से जो हम तक एनर्जी आ रही है वो भी वेव्स की फॉर्म में आ रही है. सो दिस इज़ द प्रूफ दैट वेव्स आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी. आप इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स ले सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, द टॉपिक इज़ अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. वेवलेंथ अभी आपने पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस इन फॉर्म ऑफ longitudinal waves, and in terms of transverse wave, the distance between two consecutive crest or trough. wavelength, wave की velocity और wave की frequency, इन तीनों में क्या relation है, with the help of a formula हम prove करेंगे. Wave, you know, is the disturbance in the medium which travels from one place to the other. So when it moves, it must have some specific velocity, and this velocity will be called a velocity of the wave. And you know, 9th में आपने पढ़ा था velocity is the distance per unit time. Now students, the formula of velocity is d upon t, but here if time taken by the wave in moving from one point to the other is equal to its time period, if we take time period in place of this time, because we are talking about waves, so when wave from one end to the other moves, if the time is taken as time period and the distance covered by the wave is taken as lambda, or we can say wavelength, then the new equation is formed, that is in place of d we can put wavelength, and in place of t we can put time period. Now students, in the previous lecture you have been taught that time period is the reciprocal of frequency, or the frequency is the reciprocal of time period. Now here you can see the time period is denominator, we can write it as 1 by t multiplied by lambda, and where there is 1 by t, that is equal to frequency. So in place of 1 by t we can put
frequency and multiplied by this lambda wavelength. So we got another equation that whenever we want to find the velocity or the speed of the wave, then it will not be distance per unit time, rather it will be the product of frequency into wavelength. Let us solve an example. This example says a wave moves on a slinky with the frequency of 4 Hz and wavelength of 0.4 meter. What is the speed? अभी जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. Frequency is 4 Hz, wavelength is 0.4 meter. Formula is V equals to the product of frequency into wavelength. Frequency is 4 Hz, wavelength is 0.4 meter. Its wavelength, that's why its unit will be meter, and finally their product will be 1.6. You have found the velocity, so that's why the unit will be meter per second. Students, today's last topic is ripple tank, और ये जो टॉपिक है अगले 3-4 टॉपिक में ये यूज़ होगा. What is ripple tank? It says that ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristics. यानी रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वाटर वेव जनरेट करते हैं और देन उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. यू कैन सी दिस डायग्राम. पहले आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताता हूँ. वी हैव अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग अ ग्लास बॉटम, और जो इसका ग्लास बॉटम है वो ट्रांसपेरेंट है. देयर यू कैन सी एन ऑसिलेटिंग पैडल and we have put some water in that dish. There is a power supply, there is a lamp and a stand. चूँकि इसकी बॉटम जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की है, सो एट द बॉटम फ्लोर पे हमने वाइट शीट या वाइट पेपर रखा हुआ है जिस पर हम वेव्स को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे. एज सुन एज द पावर सप्लाई और द स्विच इज ऑन, देन दिस ऑसिलेटिंग पैडल स्टार्ट्स वाइब्रेशन. ये मूव करना शुरू करता है, एंड देन एज इट टचेज द सरफेस ऑफ द वाटर इट फॉर्म्स और इट जनरेट्स स्ट्रेट वेव्स. आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऑसिलेटिंग पैडल है ये इस पर स्ट्रेट वेव्स जनरेट कर रहा है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लैम्प, जब लैम्प की लाइट इस पर पड़ेगी, these straight waves are seen on the surface of this white screen or paper, and इस तरह से हम इनको ऑब्जर्व करेंगे. The waves which are produced in ripple tank will be in this form. Bright lines और dark lines की फॉर्म में होंगी. ये जो आपको बीच में white lines नज़र आ रही हैं, these are called bright lines, और ये जो colored line आपको नज़र आ रही हैं, these are called the dark lines. and इस फॉर्म में आपको ripple tank में waves प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएंगी. एंड आपकी बुक में एक क्विक क्विज या मिनी एक्सरसाइज है कि व्हाट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन ऑफ द रिपल टैंक रिप्रेजेंट. तो जो ब्राइट फ्रिंजेस है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डार्क फ्रिंजेस हैं, फ्रिंजेस मीन्स लाइंस, वो ट्रफ को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगेन द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क लाइंस और टू bright lines is called the wavelength. Now it's time to give you your assignment. Students, you are supposed to solve related MCQs. From review questions, there are few questions 10.5 to 10.8, and from numerical problems, question number 10.5 to 10.10. These are the questions which are related to our today's topic, and you are supposed to try yourself to solve these questions and write their answers on your neat notebooks. After reopening the school, your neat notebooks will be checked, and you should not worry about that. अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, if you are unable to solve or answer any question, so you may ask your teacher. After reopening the school, you may get help from your teacher, and that's why you should not get worried about that. Fine. So it was the end of today's lecture. Thank you very much. Have a nice day. Allah Hafiz.